We will discuss about calculation of inflation rate using consumer price index. Last time we discussed how to calculate inflation rate using GDP deflator. So GDP deflator is a general price level, and consumer price index is also a price level, general price level. Okay. So it's a measure of overall level of prices, and it is used to track changes in the typical household's cost of living. Okay, so we use GDP deflator to see what is happening to the cost of living of the household, because consumer price index shows the cost of fixed basket of commodities that are purchased by middle class urban consumer. So there are fixed, you know, commodities in the basket, and then we see how the cost of this basket changes over time. So if the cost of basket is increasing over time, then we can say that there is an increase in the cost of living. Okay, so this means it becomes more expensive to live. So then the question is how to construct consumer price index. At the economy level, there are many commodities, more than 400 commodities are in the basket. Okay, and then we calculate the prices of those commodities and their weight, and then finally we come up with that index of consumer price. But here, to make it very simple, we take a few commodities to construct consumer price index. The idea is same. Okay. So what we do, we basically survey consumers to determine the composition of typical consumer basket in reality on, and then every month we collect data on prices of all such items that are in the basket, and then we compute the cost of that basket. So this is the way to calculate the CPI in any month. Okay, so we calculate the cost of basket in that month or that time period, and then cost of basket in the base period. Okay, so if we want to calculate CPI on monthly basis, so then we take the cost of basket in that month and the cost of basket in base period. So we make some month as a base period, and then we compare with this, and then we multiply this with 100, so we will get the index, consumer price index. Okay, and to calculate the cost of basket, we have to multiply the price with the quantity, and then we have to add all these values to get a single figure for the cost of basket in that month. So this is the example how to compute consumer price index. So suppose in the basket there are 20 pizzas and 10 compact disc, 10 CDs. So this is the basket. Okay. And then we have the prices. In 2002, the price of pizza is $10. Then we can see that in 2003, it increases to $11, then $12, and then $13. And these are the prices of CDs. Okay. In 2002, it is $15. Then 2003, it is same $15. 2004, it increases to $16, and then 2005, it decreased to $15. And the basket is that there are 20 pizza and 10 compact disc. Then the question is how to calculate the cost of basket in each period. We have to look at how many pizzas are there, and we have to multiply with the price of pizza, then we will get the value of pizza. Then, or we can say that we will get the cost of pizza. Then we have compact disc, we have to multiply with the price of CDs, and we will get the cost of CD or value of CD, and then we will add both, then we will get the cost of this basket,
because in the basket there are 20 pizzas and 10 CDs. So then we will get the cost of basket in 2002. Okay. Now for you, on your copy, you have to write these prices. Okay. Just write these two column. अपनी कॉपी पे आप ईयर लिखें, ठीक है, और हमें और 4-5 कॉलम बनाने होंगे आपको, जो कि आपको कैलकुलेट करना है. So just write one column. You have to write these years, and then you have to write the prices. Then you have to write the prices of CD. Okay. ये note down कर लें. Then we will move further. नोट डाउन हो गया? नोट कर लिया आप लोगों ने? सर. ठीक है ना? अब आपकी समझ में आ गया हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ बास्केट. ओके. जो बास्केट है उसमें 20 पिज़्ज़ा and 10 compact disc. The price is given. Okay. Then if we want to calculate the CPI, we will use 2002 as base year. So CPI calculation का फार्मूला आप लोग नोट डाउन कर लें. You have to write down how to calculate CPI. This is the formula. Okay. Write down this, that CPI equals cost of basket in that period or in month or year. हमारे केस में now we have year. Okay. It could be monthly, it could be yearly. And then cost of basket in base period. Write down this. So in our case, it will be year. And then multiply by 100. Okay. Just note down this. CPI equals cost of basket in that month divided by cost of basket in base period multiplied by 100. So next we will calculate the CPI for each period. Okay. 2002, 2003, 2004 and 2005. And then using the CPI figure and making 2000, because 2002 is the base period, then we will calculate the inflation rate from the preceding period. Okay. Now let's calculate. So you have to give me the answer for the cost of basket. ठीक है, आप अपने कैलकुलेट कर रहे हैं and then you write down your answers for the cost of basket in 2002, 2003, 2004 and 2005. कॉस्ट ऑफ बास्केट और 2002 आपने कैलकुलेट कर लिया, उसकी वैल्यू क्या है? एनी आंसर? सर जी 200 आ रहा है सर. 200 आ रहा है. चलें, और कोई आंसर है कॉस्ट ऑफ बास्केट है? दोनों कंबाइन करके बताना होगा ना सर. क्या आंसर आ रहा है? 350. 350 आ रहा है. अच्छा, एक का आंसर 200 है, एक का आंसर 350 है. और कोई आंसर? एनी अदर आंसर? सर 200 आ रहा है. आपको 200 आ रहा है और 350 आ रहा है. अच्छा, और एनी अदर आंसर फॉर द कॉस्ट ऑफ बास्केट इन 2002? सर 350 आ रहा है. 350. Okay. So now we have two
200 and 350. Yes, any other answer, new answer? या तो 200 करेक्ट होगा या 350 करेक्ट होगा. किसी और के पास कोई नया आंसर है? देखिए आप, if you go back, look at the numbers. This is the price of pizza. Okay, this is the price of CD. Basket, in the basket contains 20 pizza and 10 compact disc. तो हमें तो कॉस्ट ऑफ बास्केट चाहिए ना. मैंने ये तो नहीं कहा ना कि कॉस्ट ऑफ पिज़्ज़ा क्या है या कॉस्ट ऑफ सीडी क्या है. तो अब बताएं आंसर. जो 200 कह रहे हैं उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया था? 200 आंसर किसने दिया था? सर मैंने ना सिर्फ उसका लिया था, पिज्जा का लिया था, उसमें सीडी ऐड नहीं किया था, इसलिए गलत हुआ सर. क्यों? मैंने ये तो नहीं पूछा था ना कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पिज़्ज़ा. हमने तो कह रहे थे व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बास्केट. डोंट इग्नोर दिस ना. Cost of basket, it means 200 multiplied by 10 and then 10 multiplied by 15. So 200 plus 150, it will be 350. That is the cost of basket in 2002. Then now you have to calculate using this cost of basket in 2003, 2004, 2005 using the same method. So you have the answers. What is the cost of basket in 2003? 370. 370. सबका आंसर 370. अब तो फर्क नहीं है. किसी और का आंसर है डिफरेंट 370 के? Okay, what is the answer for 2004 cost of basket? 400. 400 है. All of you agree? Yes, sir. Okay. What is the cost of basket in 2005? 410. 410 सर, 410. तो फर्स्ट आंसर है 350. सेकंड 2003 का है 370. 370. इसके बाद के बाद सर 400. 400 and then last one 410. 410. Is there anyone who disagree with any number? तो बता दें. No disagreement. All of you agree on this number. Okay, now if you got these numbers, then you have to calculate CPI. You know how to calculate CPI. Okay. Cost of basket in that period divided by cost of basket in base period, and then you have to multiply by 100. So this is the CPI. So now in our case base period is 2002. Okay, so use this. So it means you will use the cost of basket of 2002 as base period, and then you will take the cost of basket in 2002, then 2003, then 2000, okay, or whatever is, and then for each
you have to multiply by 100. So what will be the answer for the CPI for 2002? क्या होगी 105 वैल्यू? 105 105 100% for सर 2002. सर 22 के लिए 100 होगा और 3 के लिए 105 होगा. अच्छा 3 के लिए 105. All of you are getting 100 for 2002 CPI? यस सर Yes, sir. Yes, sir. Okay. What about 2003 105? All of you are getting 105? Yes, sir. Any different answer? किसी का कोई आंसर डिफरेंट तो नहीं है? जिसका आंसर डिफरेंट हो फौरन बता दे कि मेरा आंसर ये है. ओके हो सकता है आप सही हो बाकी गलत हो. What about 2004? सर 114 आ रहा है सर. 114 सर 114. 114. Okay. Okay. No objection on this answer? Okay. What about 2005? 117. 117. 117.14. Yes, sir. 117.14. Okay. What about others? Any objection on this answer? जिसका आंसर भी डिफरेंट हो तो वो बता दे कि नहीं मेरा आंसर ये है. चलें. So you calculated cost of basket, you calculated inflation, CPI. Now you have to calculate inflation rate. So inflation rate, how to calculate inflation rate? Last time we calculated inflation rate using GDP deflator. GDP deflator was also, that is, GDP deflator is index, ना? And कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन रेट? लास्ट टाइम हमने कैलकुलेट किया था इन्फ्लेशन रेट. क्या किया था हमने? जीडीपी डिफरेटर से देन वी गॉट इन्फ्लेशन रेट. सर हमने माइनस किया था अपना बेस ईयर को नेक्स्ट ईयर से, करंट ईयर से माइनस किया था. माइनस किया है. करंट ईयर से ना सर बेस ईयर को माइनस करके बेस ईयर से डिवाइड किया था सर. करंट पीरियड माइनस बेस ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय करंट पीरियड सर माइनस बेस ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 100. ओके. तो इसी तरह अभी इफ यू वांट टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन रेट यू हैव टू टेक करंट पीरियड CPI. Okay, if you want to calculate inflation rate for 2003, it means this is your current period, this is your previous period, okay, divided by previous period, multiply by 100. Because in this question we have to calculate inflation rate from the preceding year. We are not asking that you have to calculate inflation rate from the base year. Okay. तो इन्फ्लेशन रेट जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं प्रीसीडिंग ईयर पिछले साल के मुकाबले में, तो देन इट मीन्स यू विल टेक करंट पीरियड माइनस प्रीवियस पीरियड, ओके, डिवाइडेड बाय प्रीवियस पीरियड मल्टीप्लाइड बाय 100. क्या इन्फ्लेशन रेट क्या आ रहा है 2003 का? व्हाट इज इन्फ्लेशन रेट फॉर 2003? 5%. 5%. ऑल ऑफ यू एग्री? एनी ऑब्जेक्शन? सर अगर हम मल्टीप्लाई 100 करते हैं तो ज्यादा हो जाएगा. हमें मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, हमें जस्ट माइनस करना होगा बेस ईयर से. आप करके देख लेना. सर 5.7 आ रहा है. 5.7 आ रहा है जी. बाकियों का आंसर 5 आ रहा है. 5.7. 5 किसने कहा था? यस 5 आंसर आया था ना इससे पहले. वो चेक कर लें अपना आंसर. अगेन यू हैव टू चेक योर आंसर वेदर 5 इज करेक्ट और 5.7 इज करेक्ट.
यस नेक्स्ट पीरियड का क्या आंसर होगा 2004 का प्रीसीडिंग पीरियड से लेना है आपने so it mean this period minus this period Sir, CPI divided by सर 2013 सर CPI multiplied सर 8.5 होगा 2004 का अच्छा क्योंकि 2004 का इन्फ्लेशन हमेशा 8.5 होगा सर क्योंकि इन्फ्लेशन नहीं हमेशा ना अपने पिछले प्रीवियस ईयर से शेयर कंपेयर होता है यस तो 2004 inflation you are saying it is 8.5 सर 8.5 और Yes, sir. 2003 का इन्फ्लेशन रेट आप कह रहे हैं 5.7 5.7 all of you agree जिसको ऑब्जेक्शन हो you can raise your objection what about last 2005 का इन्फ्लेशन रेट 2.9 आ रहा है सर 2005 का 4.9 2.9 सर 2.9 yes Yes, sir. okay all of you are getting 2.9 for 2005 inflation rate yes, sir. 2.6. Same it's. let's look at the answers सबका आंसर यही है 2002 के लिए cost of basket 350 CPI 100 then cost of basket is 370 CPI is 100 5.7 or 5.7 inflation rate 5.7% then 8.1% inflation rate then 2.5%. So these are the answers. Now you can just compare your answer with these answers. All correct? किसके सारे आंसर करेक्ट हैं? Yes, sir. Okay. Then the reasons why the CPI may overstate inflation. Sometimes we overstate inflation when we are calculating inflation rate using CPI. The problem with CPI is that CPI uses fixed rate, so it cannot reflect consumer ability to substitute towards goods whose relative prices have fallen. You see, what happened when there is a increase in the price of a commodity, then we substitute that good with some other good that price is relatively lower. Okay, but this substitution is not reflected in consumer price index. Okay, that's why we say there is a substitution bias. So because this substitution cannot be reflected, so that's why it means we are overstating the inflation rate. So when the price of commodities increases, basket is fixed, so it shows higher inflation rate, and then it shows when there is a high inflation rate, this means there is increase in the cost of living. But actually, it might happen that when there is increase in the price of a commodity, consumer will shift to some other commodities that are substitute for that good, and they are relatively cheaper. But that substitution is not reflected in consumer price index. So that's why we say that consumer price index may overstate inflation. Substitution choice is not available because basket is fixed. Is the introduction of new goods. When there is introduction of new goods, it will make consumer better off. Okay, but it is not reflected in the consumer price index, because consumer price, once you decided that these are the 400 commodities that would be included in the consumer price index. Now, if there is introduction of new good, maybe using that new good, that good could be cheaper, that good may better off consumer, but that good is not included in the basket.
because basket is already made maybe 5 years back or 10 years back, and so we don't change basket every year. Okay, so we don't change the commodities that make the basket in the consumer price index. So if there is introduction of new good, will not be included in the consumer price index. So again, we might be reflecting there is increase in inflation, because for the existing good, the prices could be higher, but for the new goods, sometimes they are offered at a lower price, and consumer use such new goods instead of the existing goods. But that could not be reflected in consumer price index. Then unmeasured changes in quality. Sometimes quality improve, and because of this, consumers are better off. But that improvement in quality is not reflected in the consumer price index and then inflation. So sometimes if you are using a detergent and then through some technology they improve the quality of that detergent, and now using less detergent, you know uh, you can get better result or same result even. So but it could be reflected that the cost is same, because you are paying this price, but actually if you are paying the same price and the quality of that good has improved, so then it means you are better off. Okay, so these are the problem because of which we say that CPI may overstate inflation. And then we discuss now two price levels. One is the GDP deflator, the other is consumer price index. So we calculate inflation rate, GDP using GDP deflator, and we can also calculate inflation rate using consumer price index. But there are some differences in these two price levels. For the prices of capital goods, they are included in GDP deflator if produced domestically. But the price of capital goods are not included in consumer price index, because consumer price index only includes such goods that are purchased by consumer, and capital goods are not purchased by consumer, they are purchased by producer. Okay, so this is the difference between the GDP and CPI. And for the prices of imported consumer goods, the imported consumer goods are included in CPI, but they are not included in GDP deflator. Okay, so this is the difference related to imported consumer goods. And for CPI, the basket is fixed, but GDP deflator basket is not fixed, and it changes every year. It depends what are the goods and services that are produced in the economy. So it depends what produced in the economy, that would be included in GDP and then reflected in GDP deflator. But in case of consumer price index, because this is a fixed basket of commodities, so the goods that are in the basket are fixed, therefore consumer price index is also fixed. Then now we will see how to calculate unemployment rate and labor force participation rate and all these indicators. So far we discussed different macroeconomic indicator. We discussed GDP, which is a macroeconomic indicator. We discussed GNP. We discussed GDP growth rate, okay, which is also called economic growth rate. Then we discuss inflation rate. Inflation is also macroeconomic indicator. Okay, and then unemployment
rate is also a macroeconomic indicator, and labor force participation rate. We in the economy, we have population, and in the population there are some people who are working for a paid job, and such people are known as employed. Okay, and then there are some who are not working and they are not looking for a job, so that such people would be called unemployed. So now we should be clear in the categories of population. Okay, in the categories of population, you see there are different age group people. Now surely a child would not be looking for a job. 5-year age child or 10-year age child, they are not looking for the job. So we will not say they are unemployed. They are going to school. Okay, so those who reached to the working age population, suppose if we say that working age population is 18 year, okay, and then up to 60 year, at the age of 60 year people get retired. If we define, okay, there are now different definitions of working age population. In some countries they said 12 year to 60 year, some countries say 16 year to 60 year. So it depends what definition of working age population the country is adopting. Okay, because if you adopted a definition that 12 year to 60 year is the working age population, and if 10-year person is working, then this means there is a child labor issue in that economy. That's why first we have to define what is our working age population, and then within that working age, suppose we define it is 12 year to 60 year, or 14 year to 60 year, or 16 year to whatever is our definition. Now within that, so it means above 60 year they are not working age, they are already retired. Below 12 year, if we say 12 year, below 12 year they are also not working age, they are child. Now within that working age population, there are two categories: those who are willing to work and they are looking for a job, okay, and those who are not interested to work and they are not looking for a job. Now you are in working age population, but if you are not looking for a job and you are not interested to work, then this means you are not in the labor force. You are in the working day age population, but because you are not interested to work, you are not looking for any job, then you are not in the labor force. You see, there are some females, they are not looking for a job, they are not interested to work, so they are housewife. So they are not in our labor force. But those female who are looking for a job, they are interested to work, and then such female would be considered as in the labor force. Okay. Now, if you see in developed countries, the participation of female in the labor force is very high. But in developing countries, the participation of female in the labor force is low. Okay. Because in the developing countries there is a culture that female, they stay home, they are housewife. Actually they are working maybe more than male, because they take care of children at home, they are performing different duties at home. But in our economics definition, because they are not looking for a job,
and they are not interested to work. So that's why they are not in labor force. Then there are also some male. You see, they are not looking for a job. In your family, you will find one or two person. They don't work, and they even some people they spend their whole life without working, but they are dependent on others. So they are not interested to work. The same is with the beggars. You will find there are many beggars. If you offer them that are you willing to work, they say no. They are not looking for a job. That's why they are doing beggary. So that's why they are not in participating in the labor force, and they are not in our labor force. Then those who are in the labor force. This means these are the people who are working at a job, and such could be classified as employed labor force. And then there are some people, unfortunately, who don't get any job, and such would be classified as unemployed labor force. So they are in the labor force because they are looking for a job, but they are not getting a job. So they would be classified unemployed. So this means if I want to get the total labor force comprises of employed labor force and unemployed labor force. The labor force, the amount of labor available for producing goods and services, all employed plus unemployed person. Okay. Then not in the labor force, it means not employed, not looking for it. So if I want to get the number for the people who are not in the labor force from population, I will minus the labor force. Adult population, working age population. Then I will get the people they are not in our labor force. So if I want to calculate unemployment rate, this is the percentage of the labor force that is unemployed. So it means unemployed labor force divided by total labor force multiplied by 100. Then I will get unemployment rate. Okay. Just write the formula. If you want to get unemployment rate, so unemployment rate equals unemployed labor force divided by total labor force multiplied by 100. Then you will get unemployment rate. And then we have labor force participation rate. This is the fraction of the adult population that participate in the labor force. If you want to get the labor force participation rate, so this means labor force divided by adult population multiplied by 100. Then you will get labor force participation rate. So write down this formula that if you want to get labor force participation rate, this equals labor force divided by adult population multiplied by 100. Now let's compute the labor force statistics. So I'm giving you these numbers. We have a number of people employed, 144.4 million. Number of unemployed people, 7 million. Adult population is 228.8 million. Now you have to calculate. Calculate the figure for labor force, number of people not in the labor force, unemployment rate, and labor force participation rate. These four statistics you have to calculate.
चलिए इसको कैलकुलेट करें और लेबर फोर्स का आंसर आ जाए मुझे बता दें पहले। सर फर्स्ट आंसर होगा 151.14। थर्ड का नहीं, मैं तो फर्स्ट का आंसर पूछ रहा हूँ, लेबर फोर्स का। ये सर फर्स्ट का कह रहा हूँ 144.4 और आपका अनएम्प्लॉयड वो आपकी टोटल लेबर फोर्स है 151.14 हो जाएगी सर। मैं कह रहा हूँ लेबर फोर्स का नंबर यस सर 151.14 151.14। यस सर। वाई 14? सर अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड दोनों टोटल में तो 151 लेबर फोर्स सम हो जाएगी ना हाँ तो 14 क्यों आ रहा है? सर पॉइंट्स में हाँ 1 4 नहीं आ रहा सर, ये 144.4 तो 144 51.4 आ रहा है सर। 144 है ना। यस सर 151.4 सॉरी सर 1 एक्स्ट्रा लग गया 51.4। चलें तो ऑल ऑफ यू आर गेटिंग लेबर फोर्स 151.4। चलें नेक्स्ट, नंबर ऑफ पीपल नॉट इन द लेबर फोर्स। यस सर क्या आंसर है? व्हाट इज द आंसर? 77.4 आ रहा है सर। 77.4 आ रहा है सबका? नंबर ऑफ पीपल नॉट इन द लेबर फोर्स। यस सर यही आ रहा है। सही, आप कैलकुलेट सॉरी करें सर आई कांट अनएम्प्लॉयमेंट। गेट इट। यस, नंबर ऑफ पीपल नॉट इन द लेबर फोर्स, हाउ टू कैलकुलेट? कैसे कैलकुलेट किया है? पहले तो लेबर फोर्स आपने कैलकुलेट किया ना, लेबर फोर्स आपने कैसे कैलकुलेट किया? लेबर फोर्स हमने जो अनएम्प्लॉयड है उसको एम्प्लॉयड को ऐड कर लिया। हाँ, नंबर एम्प्लॉयड प्लस नंबर अनएम्प्लॉयड दोनों को ऐड किया तो आपको ये नंबर लेबर फोर्स का नंबर मिल गया। अब नंबर ऑफ पीपल नॉट इन द लेबर फोर्स, हाउ टू कैलकुलेट? टोटल पॉपुलेशन में से टोटल लेबर फोर्स माइनस कर दी तो लिए आपके नंबर ऑफ पीपल नॉट इन लेबर फोर्स आ जाएगा। सही है, एडल्ट एडल्ट पॉपुलेशन जो है माइनस करेंगे टोटल लेबर फोर्स ना, ये यस लेबर सर फोर्स। यस सर। एडल्ट पॉपुलेशन है 228.8 माइनस लेबर फोर्स की जो आपकी फिगर है उसको माइनस कर दें। क्या वैल्यू आ रही है? सेवेंटी 7.4 आ रही है सर नेट आपकी जो नॉट इन लेबर फोर्स लोग हैं 77.4 मिलियन 77.4। 4। ओके, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी मैंने बताया। सर अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स से को डिवाइड कर देंगे टोटल लेबर फोर्स से, फिर मल्टीप्लाई बाय 100। गुड, चलें अब इस 4.62 तरह आ रही है करके सर। उसका नंबर बता दें मुझे क्या होगा। सर 4.62 आ रही है मेरे पास। 4.62। 4.6। यस सर। ठीक है, अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 100, तो यू विल गेट अनएम्प्लॉयमेंट रेट। क्या आंसर आ रहा है? 4.62 आ रहा है सर। 4.62 सबका आ रहा है। यस सर ओके, लेबर फोर्स पार्टिसिपेट यस सर कैसे कैलकुलेट करें? हाउ टू कैलकुलेट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट?
एनी आंसर? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी बताया था। सर लेबर फोर्स को डिवाइड कर देंगे अडल्ट पॉपुलेशन 66.17 आ रहा है सर। ओके, 66.17 लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय एडल्ट पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 100. ओके, कैलकुलेट करें. So 66.17. 66.17. Any other answer? यस सर, यही आ रहा है 66.17. यस सर, यही आ रहा है 66 ठीक है, पॉइंट। ये आपके नंबर थे. एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, पॉपुलेशन. हमने लेबर फोर्स कैलकुलेट किया, which is sum of employed and unemployed. तो 144.4 प्लस 7 151. तो ये आंसर है. इसके बाद नॉट इन लेबर फोर्स में से आपने पॉपुलेशन में से माइनस किया लेबर फोर्स, तो 77.4 जो है नॉट इन लेबर फोर्स आ गया. फिर आपने अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट किया. तो जो कि अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स, ये मल्टीप्लाइड बाय 100, तो यू गॉट इन परसेंटेज. फिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 100. तो लेबर फोर्स हमारा 151.4 डिवाइडेड बाय जो हमारा एडल्ट पॉपुलेशन है 228.8 मल्टीप्लाई बाय 100 66.2. यही आ रहा है. Yes sir. Yes sir. अब आप सबको आ गया कि इस तरह स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट होंगे. एनी इशू, एनी प्रॉब्लम विद दिस? आई थिंक इट्स वेरी इजी ना. चलें नेक्स्ट. नाउ देयर आर टू अर्थमेटिक ट्रिक्स. यू हैव टू लर्न दीज टू ट्रिक्स वर्किंग विद परसेंटेज. फर्स्ट ट्रिक ये है कि फॉर एनी वेरिएबल एक्स इन वाई, परसेंटेज चेंज इन एक्स इनटू वाई, एक्स एंड वाई जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो आपके पास परसेंटेज चेंज इन एक्स उसका पता हो और परसेंटेज चेंज इन वाई आपको पता हो और वो दोनों वेरिएबल मल्टीप्लाई हों, तो जो परसेंटेज चेंज इन एक्स इंटू वाई वुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन एक्स प्लस परसेंटेज चेंज इन वाई. ठीक है, उसकी एग्जाम्पल आप देख लें. तो आपकी जो इनकम है ना, वेज इनकम किसके बराबर होती है? वेज इनकम इज जो आपकी आर्ली वेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आवर वर्क होता है ना, वो होता है ना. आप अगर आपको आर्ली वेज आपको जो है वो आर्ली के हिसाब से दिया जाए, 1 घंटे का आपको जो है वो 200 रुपीज़ मिल रहा. तो इफ़ यू वर्क 10 आवर, 200 इज द वेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आवर वर्क 10, तो आपकी जो वेज इनकम उस डे की हो जाएगी 1000 रुपीज़. ठीक है, तो वेज इनकम इक्वल्स वेज रेट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आवर वर्क. तो ये हम इसी तरह कह दें कि भाई ये जो चीज़ है मल्टीप्लाई होकर आ रही है वो वेज इनकम है, और एक वेरिएबल जो है वो वेज रेट है, दूसरा जो है वो वेज नंबर ऑफ आवर. अगर इफ समवन सेज दैट सपोज योर आर्ली वेज rises by 5% or you work 7% more hour, so this means your wage income will rise by approximately 12%. क्योंकि 5% plus 7% this is equals to 12%. तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो वेज इनकम है this will increase by 12%. Is this clear? No confusion on this. रिपीट करना. देखिए ना, for any two variable that are multiple and you have the percentage change in each variable, so just add them to get the percentage change in that multiple. So wage income is the multiple of hourly wage in number of hour work.
So if I say that your wage rate increases by 5%, number of hour work increases by 7%, so this means wage income increases by 12%, 5% plus 7%. Then this is the second arithmetic trick. Percentage change in x divided by y. So if there is a variable like this, x divided by y. So in this case, percentage change in this equals approximately equals percentage change in x minus percentage change in y. सैम्पल जो है वो जीडीपी डिफ्लेटर है ना, तो अगर जीडीपी डिफ्लेटर है, अगर हमें इफ नॉमिनल जीडीपी जो है, नॉमिनल जीडीपी राइजेस बाय 9%, रियल जीडीपी राइजेस बाय 4%, तो जीडीपी या इन्फ्लेशन रेट जो है ना increases approximately by 5%. Okay, nominal minus real GDP growth rate. So that is reflected in the inflation rate. तो सिंपली हमें अगर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ पता चल जाए कि कितने परसेंट से इजाफा हुआ है और रियल जीडीपी किस परसेंट से इजाफा हुआ है, देन वी कैन से दैट कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो किस परसेंटेज से इजाफा हुआ है, यूजिंग दिस ट्रिक. 9% minus 4% is 5%. So this means inflation rate increased by 5%. So this is the second trick. Now I will take your test. Let me ask. अगर population increases by 1%, labor force increases by 3%, number of unemployed person increases by 2%, then you have to compute changes in labor force participation rate or unemployment rate. क्या आंसर होगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का और अनएम्प्लॉयमेंट रेट? What will be the answer for labor force participation rate? सर 6% होगा. 6% होगा. सर मुझे लग रहा है 6 होगा. Other answer? What would be the labor force participation rate? Sir, 5%. 5%. Yes, any other answer? 3%. 3%. Okay. Fine. Any other answer? Again, you are not using the logic. First of all, you have to think how do we calculate labor force participation rate. Then you have to use the arithmetic trick. Don't guess. Use your logic. You know how to calculate labor force participation rate? कैसे calculate करते हैं? Any answer? टोटल पॉपुलेशन में से जो लेबर अनएम्प्लॉयड होती है और एम्प्लॉयड होती है दोनों को सम कर लेते हैं तो आपका पार्टिसिपेशन रेट आ जाता है. नहीं, हाउ टू कैलकुलेट? अभी तो हमने कैलकुलेट किया था लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैसे कैलकुलेट होता है. लेबर फोर्स को हम डिवाइड करते हैं सर. लेबर फोर्स divided by डिवाइडेड बाय adult population. पॉपुलेशन. ठीक है ना, लेबर फोर्स को आप डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन से. अब आप अर्थमेटिक ट्रिक यूज करें. लेबर फोर्स का ग्रोथ रेट आपको गिवन है
पॉपुलेशन का जो है ग्रोथ रेट गिवन है इंक्रीज, तो अर्थमेटिक ट्रिक को यूज करके लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का बता दें क्या चेंज होगा। तो 3 मल्टीप्लाई पे 1 करेंगे ना, या 3 माइनस 1 करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, आई थिंक अभी -1 अर्थमेटिक ट्रिक बताया था, ये दो ट्रिक है ना। एक में मल्टीप्लाई करें ना, एक में माइनस करें, तो कौन सा ट्रिक अप्लाई करें वो? लॉजिक, यूज योर लॉजिक, डोंट गेस। ये सिचुएशन सर है, प्लस हो जाएगी ना दोनों परसेंटेज। अच्छा प्लस हो जाएगी। एक एक ट्रिक ये है, एक ट्रिक ये है, तो कौन सी ट्रिक यूज होगी उसको यूज करें ना। यस, व्हाट इज द आंसर? यस, व्हाट इज द आंसर? सर 2। हाँ, अब आपने लॉजिक लॉजिक यूज की ना, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना, लेबर फोर्स डिवाइड हो रहा है पॉपुलेशन से, तब आपको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन आ रहा है। तो अगर दो वेरिएबल डिवाइड हो रहे हों, जब हमें दोनों वेरिएबल का ग्रोथ रेट गिवन हो, तो देन जो लेबर सर फोर्स, मैंने डिवीजन के हिसाब से नहीं देखा सर, मैंने इसके हिसाब से देखा कि आपका पॉपुलेशन, मतलब कि पॉपुलेशन आपका इंक्रीज हो रहा है 1% से, तो लेबर नहीं फोर्स तो आपका इंक्रीज हो रहा है उस 3% लॉजिक से, को तो 1 को यूज 3 करें से ना माइनस। जो कि उसमें गिवन है। अभी हमने यही कहा है ना कि जो अगर वेरिएबल डिवाइड हो रहे हों और इंडिविजुअल वेरिएबल का ग्रोथ रेट गिवन हो, तो देन यू विल सब्ट्रैक्ट। दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हों, इंडिविजुअल वेरिएबल का ग्रोथ रेट गिवन हो, तो फिर हम उसको ऐड करेंगे। तो इस केस में तो डिवाइड हो रहे होंगे ना, तो इसलिए लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, तब आपको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आता है। तो लेबर फोर्स 3%, पॉपुलेशन -1%, योर आंसर वुड बी 2%। व्हाट अबाउट दिस अनएम्प्लॉयमेंट रेट? अब गलती नहीं कीजिएगा। अब क्या करेंगे? हाउ टू कैलकुलेट unemployment rate if you have these numbers? What would be the change in percentage change in unemployment rate if you have percentage change in these figures? Yes, any answer? Sorry sir, we can't, we are unable to apply the trick. Why? How to calculate unemployment rate? हाउ टू कैलकुलेट? अभी तो आपने कैलकुलेट किया अभी था तो आपने unemployment। Yes, sir. Unemployed labor force divided by total labor force and multiply by 100, तो unemployment rate आ तो जाएगा। आपके पास यहाँ पे जो है नंबर्स गिवन है ना, तो सर इंक्रीज, 1% होगा। इज दिस 1%? जस्ट चेक। Yes, sir. 2% minus 1% is equal to 1%. Population increase 1% हो रही है और क्या unemployment जो है वो जब हम 2% increase हो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट करते हैं, क्या हम पॉपुलेशन को यूज करते हैं? जब हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट करते हैं, तो क्या उस फार्मूले में पॉपुलेशन होता है? पॉपुलेशन की तो नहीं होता ना। अभी आपने खुद कहा ना कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट करते हम हैं अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय व्हाट? टोटल लेबर फोर्स। टोटल लेबर फोर्स ना। तो फिर लेबर आप फोर्स। पॉपुलेशन को कैसे, उसके नंबर को कैसे ले रहे हैं? आपको तो लेबर फोर्स के नंबर को लेना चाहिए ना। यस, व्हाट वुड बी द आंसर? Percentage change in unemployment rate if you have these numbers.
तो बहुत सिंपल है. Trick is available. Numbers are simple. What would be the answer? Yes. सर 1% आएगा. Check करें दोबारा. Again check. 1% is wrong. Check. सर किसको किससे माइनस करके आप 1% लाए? सर अनएम्प्लॉयमेंट रेट को 2% को माइनस करके लेबर फोर्स की 3% से माइनस करके 1% आ रहा है. 2% माइनस 3% क्या 1% होता है? नो सर -1. माइनस 1% होगा ना. यस है सर. ना. मैथमेटिक्स sir. के रूल इतना तो पता होना चाहिए ना कि 2% माइनस 3% जो है वो 1% नहीं होता, -1% होता है. 3 को माइनस करेंगे 2 से तो 1% होगा ना. ओके. यस सर. These are the answers. 2% and -1%. तो ये तो सब you have to use the trick, you have to use the logic. Okay, don't guess. Okay. ठीक है. So we finish this chapter and